आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर है या ये हमारी आगे बर्बादी तबाही है? आप नवनीत राणा को जानते हो? No ma'am, I'm unable to recall. आम लोगों के लिए आप सोसाइटी में क्या है, आप ह्यूमन के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? It's very difficult to predict how things will work out. It's very difficult to predict. Thank you so much. Thank you sir. Hello, how are you? I'm good sir, I'm doing well. Are you comfortable? Yes, I am very comfortable. So, how's the journey of UPSC preparation for you? Sir, I have given 2 attempts so far and this is my second attempt. Last year I couldn't clear prelims. However, in this attempt I cleared prelims as well as mains and I have reached the interview stage. Thank you so much. You are from? Sir, I come from a hilltop city called Bidar in the northern part of Karnataka. These days, Karnataka facing is lot of political crisis Yes, or sir. turmoils. Yes sir. How do you think that? Sir, the current scenario which is unfolding in the state of Karnataka stems from caste-based politics, especially of consolidation of Lingayat community, where the seers of religious mats are saying that they want a Lingayat leader such as Yediyurappa. In all senses, Karnataka see lot of fluctuation in the political scenario. There's a lot of up and down. Before Yediyurappa, there was also a lot of ups and downs and turmoils in the political segments. These turmoils can affect the government organizations or the bureaucracy. What do you think about that? So it's true, political stability is required for development as well as for bureaucracy. And Karnataka has indeed faced a lot of political change in the landscape. And however, sir, when it comes to bureaucracy, bureaucrats are supposed to be non-partisan. Irrespective of whichever party is in power, they have to think in long-term perspective. So when bureaucrats work, they have to keep these things in mind and not let change of party affect their work. वहाँ पे नवनीत राणा करके अभी न्यूज़ में काफ़ी आया है, Okay, ma'am. नॉलेज है क्यों चर्चित हुई? Ma'am, I'm unable to Okay. recall exactly Okay. Navneet Rana. ये सांसद हैं और इनकी अभी सदस्यता के लिए चैलेंज किया गया है और इसमें साथ में आपके जो एरिया में है तो वहाँ में कास्ट पॉलिटिक्स, साथ में ओबीसी और एससी, वो ये सारे इस बीच में काफ़ी चर्चा में आया था, तो ये सब नॉलेज है क्या? Ma'am, I'm able to recall the one incident where और ये इन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट फाइट करके ये लोकसभा में आई। Ma'am, I'm able to recall one incident where the MP had fought an election from a reserved constituency, and later some people challenged her election because her caste was not allegedly in the scheduled caste list. So there was this tussle. Remembered. अगर आप वहाँ पे ऑफिसर होते और इस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, so ये आपकी वर्किंग पे इफेक्ट डालता या नहीं डालता? So there would be some effect because the party which would be changed and if new leader comes, then they may have different vision or different policies. So the existing policies may be changed. एक तरफ हमारा राइट टू प्राइवेसी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एक तरफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी है. इफ़ यू आर इन चार्ज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आप किधर जाना चाहोगे? Sir, I think both have to be balanced because right to privacy is also a fundamental right. Everyone's privacy matters. However, every fundamental right has reasonable restrictions. When it comes to issue of national security is supreme because it involves security of all the constituents of the country. So we have to balance both the things. And there is a thin line and a fine balance which we can maintain. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Hello everyone, my name is MD Haris Sumair. I come from Karnataka state.
This time I have secured All India rank 270 in UPSC Civil Services examination, and I will be joining the Indian Administrative Services, and I will become an IAS officer. And with respect to my optional was political science and international relations. And before my interview preparation, I had seeked mock interview guidance program from Ojang IAS, and the feedback he gave me really helped me. And the interview was very realistic as compared to the interview which I gave in civil services. And my advice, all the best to Ojang IAS Academy, and all the best to the future Ojangkians who will emerge as officers and become IAS, IFS or IPS and join the prestigious services and serve the nation. हम हैं लवासना के सफ़र में, मसूरी। क्या खूबसूरत वादियाँ, हम जस्ट लवासना के बहुत करीब आ चुके हैं, ये बिजी मार्केट से गुजरते हुए, और अब स्लोप के साथ ही लवासना शुरू होता है हमारा। मैं कर्नाटका से आता हूँ, मुझे थांगटा देखने का मौका कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लवासना में इन्होंने हर एक स्टेट का मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का कुछ ना कुछ कल्चरल पार्ट शोकेस करने की कोशिश की। आप लोगों के जो ग्रुप होते हैं उसमें भी अलग अलग रीजन्स के, लैंग्वेजेस के, हमें कोशिश यही किया जाता है, जैसे कि दो रूममेट सेम सर्विस से नहीं होते, अलग अलग सर्विस के लोग रूममेट्स होते हैं, और जो क्लास में भी ग्रुप्स होते हैं ऐसे बिठाया जाता है कि मिक्स हो, एक सर्विस के सब अलग अलग मिक्स हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें और अलग अलग जगह के लोगों से मिल सकें। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि मैं कभी नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों के साथ दिखूंगा, कभी गुजरात के या कभी महाराष्ट्र के, अलग अलग तरह के और अलग अलग राज्यों से लोगों के साथ आपको मिलने का मौका मिला है। मेरा ये मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए कि जैसे कोई भी सर्विस हो, जैसे IAS ही ले लीजिए, उसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लास्ट वाला कीवर्ड है सर्विस। तो आप अगर बनने का ये एम रखते हैं तो सर्विस मोटिव आपका पहले से क्लियर होना चाहिए कि क्यों बनना चाहते हैं। बस एग्जाम क्लियर करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम क्लियर होने के बाद आप क्या विजन रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो अगर आप पहले से दिमाग में रखें तो आपको कभी पढ़ने में कॉन्फिडेंस भी आएगा और कभी डिमोटिवेटेड फील होगा भी, तब भी वो चीज़ आपको वापस से उठा देगी। IAS में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या आपको भी है वही डर? मन में है घबराहट, भविष्य की चिंता से हैं परेशान? तो वी आर इनवाइटिंग यू फॉर मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम। सेंड योर डैफ और बनिए मॉक इंटरव्यू परिवार का हिस्सा। तो देर किस बात की, मॉक इंटरव्यूज के लिए जल्दी ही संपर्क करें। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां कुछ और। उसी तरह से ओजांग IAS एकेडमी का जो अपना अंदाज, जो तरीका है, जो एकेडमी टीम की मेहनत है, वो बिल्कुल गालिब के इसी शेर की तरह है। इसका नतीजा है हमारे 2020-21 के टॉपर्स, जिन्होंने ओजांग IAS एकेडमी का नाम रोशन ही नहीं, एक ऐसा इतिहास रचा है कि ओजांग सर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यही है ओजांग IAS एकेडमी टॉपर हारिस सुमेर की कहानी।